Good afternoon to all. Good afternoon, sir. In previous class, we have already discussed quadratic interpolation. क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन कंप्लीट कर दिए थे ना? एग्जाम्पल नहीं हुआ था सर। एग्जाम्पल नहीं हुआ था? नहीं सर। Okay. So just today we'll do an example. Examples of quadratic interpolations. अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन और सब कुछ स्टार्टिंग कर दिए थे ना? Given data, just you see given data. The quadratic spline interpolation. हाँ, quadratic spline interpolation, right? Quadratic spline interpolation. Spline interpolation. Given data, x and fx given है. X value 0, 1, 1, 2, 233, 3 to 44. These are the given data. Feed the quadratic splines. Feed the quadratic spline with M0 is equal to F double dash 0. Hello, sir. Hello. Sir, last class यहाँ तक लिखाए थे a3x3 square plus b3x3 plus equal to f2 करके. Sir, वो last था ना? हाँ, कुछ सोल्यूशन p1x, p2x, p3x इसका वैल्यू निकल दिए थे ना? No, sir. अच्छा, तो ठीक है, ये फिर कंप्लीट हम कर देते हैं. M0 is equal to F double dash 0 is equal to 0. Hence, find out estimate of F2.5. Hence, find out F2.5. These are the data from where we have to calculate F2.5. So according to spline interpolation of quadratic formula, just we can formulate an equations. तो पहले हमको इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे. What is the equations? P1x. Just to define, formulate an equations. Formulate an equations. So P1x that is equal to A1 x square plus B1x plus of C1. And just the value lie 0 to 1. This is first place term 0 to 1.
Then just you define P2x. A2x square plus B2x plus C2. And just that is defined here. 1 less than equal to x less than equal to 2. P3x A3x square plus B3x plus C3. And that will lie in 2 less than equal to x less than equal to 3. So just 2.5 lies in this interval. F 2.5 need to calculate here. So just you have to calculate 2 to 3. This is one interval, second interval, and third interval. Just we formulate an equation of spline interpolation. Since M0 is equal to F double dash 0, M0 is equal to F double dash 0, which is equal to 0. We just follow this way. Since M0, which is equal to F double dash 0, and which is equal to 0. F double dash 0, which is equal to F0, is equal to 0. So what is the value? Just we can estimate here. F double dash means second derivative part value equal to 0. So we can substitute x0, x1, x2, x3 are the values here. Just we can see here. This is x0 value, x1, x2, x3. And just given this is the value x0, this is the value x1, x2, and x3. This value is f0. This value is f1. This value is f2. And this value is f3. So in this case, M0 is equal to F double dash 0. F double dash 0. So that is in the first interval. So if F double dash 0 means this part becomes 0 in the first equations. That is considered for the first interval. That implies A1 becomes 0 for the case of double derivative. When you can do the double derivative of this function, that is 2A1 equal to 0 or A1 equal to 0. So this is A1 equal to 0. Now we have to compute the x0, x1, x2, x3, all the values, f1, f2, f3, this defined here, and substitute in the above equations. Just we have considered 3 equations, that is one equation we have considered. These are the 3 equations. The first A1 equal to 0 when you substitute in this equation, that is B1 plus C1, which is equal to F1. Just this is considered also F of 1. Now just previous example we can say
B1 x0 plus C1 is equal to B1 x0 plus C1 is equal to F0. That is from the equation for solution we can follow this is B1 x0 plus C1 is equal to F0. That is you can follow. B1 x1 is equal to F1. B1 plus C1, this is C0, is equal to F1. And you can see these equations. Two equations first. This is one. Then now x0 and x1 you can substitute. F0 and F1 also substitute. Because here is given, this function is given here. X0 is given, x1 is given. F0 is given, F1 is given. What is x0? X0 is given. 0. 0. What is x1? 1. What is F1? 1. F0, 1. F1 is 2. This value you can substitute in this equation. So this is C1 is equal to F0. This is x0 is 0. Then this simplifications. अरे F1 2 कैसे हो? F1 2 कैसे हो? Here you can see this function. Sorry, sir. Then you substitute here. This data you substitute here. सर वो सिर्फ इक्वेशन है ना, B1 x0 वही वाला. इस इक्वेशन ये जो वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे. C1 is equal to F0, that is 1. C1 is equal to 1. Can I write? Yes. C1 is value x0 डाल देंगे, F0 डाल देंगे. Then C1 वैल्यू आ जाएगा. ये तो 0 हो जाएगा because x0 is 0. So C1 value becomes F1, that is 1. Then B1 plus C1 also given here. See, B1 plus C1 is given. X1 is 1, so B1 plus C1 is given F1. F1 is 2. This is also given. So what is the value of B1 here? Because C1 has already evaluated the 1 value. So this is also 1. So just we can see B1 value and C1 value. Again, you can just comes to quadratic form. This is F0 and F1 we have to consider. The first interval we have to choose. Again, quadratic equation, that is the quadratic interval is this value. 1 to 2 interval. This is quadratic. So just you can see here a2 x1 square. A2 x1 square plus b2 x1 plus b2 x1 plus c2, which is equal to f1. A2 x2 square plus b2 x2 plus of c2, which is equal to f2. And just see the data here. Already this data is given here, x1 value and x2 value also given, and f1 value and f2 value also given. So here is given x1 is equal to x1 1. x2
2. F1 2. This is 31. Just check it. X1 X2 F1 F2. सर F2 33 है. 33 है sir. 33. Right. Okay, fine. This is 33. Then just you can substitute in this case. X1 यहाँ पे डाल देंगे. So now this value becomes to produce here. A2 plus B2 is equal to F1. This is 4A2 plus 2B2 plus C2, which is equal to 33. This is one equation. How to solve? Again, और कैसे solve कर सकते हैं? और कुछ और भी एक इक्वेशन है, सॉरी, इसके लिए और भी एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक के लिए. तो क्या है वो इक्वेशन? डेरिवेटिव वैल्यू चूज हियर. 2A2 इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. डेरिवेटिव दिस वैल्यू 2A2 x1 plus B2. 2A2 x1 plus B2, which is equal to same as the 2A1 x1 plus B1. This is a condition. Now you can substitute this value. X1, A1 value has already evaluated, B1 also evaluated. And X1 value you can substitute here. What is the X1? That is 1. So 2A2 plus B2, which is equal to this value. And 2A1, what is X1 is 1, 2A1 plus B1. The 2A1 plus B1. A1, B1, 1, 1 is given. So that is 3. 2A2 plus B2, which is equal to 3 hoga. That is 3. A1, A1 B1. What is the value A1 B1? A1 कितना था? 0. A1 0 है sir. A1 0. तो B1 1. तो only value 1 आएगा. This is. Now we need to solve 3 equations. These 3 equations we need to solve. सर ये वाला स्टेप और एक बार. देखो इसका डेरिवेटिव को हम इक्वलाइज करेंगे. प्रीवियस इक्वेशन का जो वैल्यू है 3 इक्वेशन हमको चाहिए. इसका डेरिवेटिव वैल्यू. व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? 2A2 x1 plus B2. This value which is same as the A1 का कंडीशन में जो होगा. ये जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे वही वैल्यू लिखेंगे 2A1 x1 plus B1, because these are the known values. Because इसको इक्वेशन सॉल्यूशन करने के लिए 3 मुझे अननोन चाहिए, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई किए. तो ये यहाँ वाला स्टेप कैसे कर रहे हैं? मतलब सेम A1 क्या है, क्यों ले रहे हैं? इसका डेरिवेटिव A2 का इक्वेशन A1 का जब इक्वेशन आता है तो A1 x1 स्क्वायर प्लस B1 x1 प्लस C1 इज इक्वल टू F0 और F1 नेमिंग किए थे प्रीवियस इक्वेशन में. देखो ये वाला भी हम F1 नेमिंग किए थे. सर तो उसको इक्वेट क्यों करेंगे? इक्वेट करेंगे तो और इक्वेशन आएगा. सॉल्यूशन 3 अननोन है, इसलिए मुझे 3 इक्वेशन चाहिए. A1 B1 A2 B2 C2 है ना, 3 अननोन वेरिएबल है.
इसलिए 3 इक्वेशन करेंगे तो ही वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। सर अगर उसका आरएचएस इक्वल होगा तो एलएचएस इक्वल करेंगे ना, तो हाँ ना, ये आरएचएस है, F1 है ना, इसीलिए इक्वल हो गया ना, F1 है ना, B1 X1 प्लस C1 ये डाल दे सकते हैं। और सर तो B1 x1 प्लस C1 लेंगे ना, तो हम तो वो ले रहे हैं कि 2 नहीं, A1 उसका जो x1 इक्वेशन प्लस है वो B। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में लेंगे तो उसका ही वैल्यू रहेगा। एक क्वाड्रेटिक जो फॉर्मेट लेंगे A1 x1 स्क्वायर प्लस A2 x1 स्क्वायर, फिर A1 दिस इज आल्सो हमारा B1 प्लस ऑफ C1 इक्वल टू F1 होगा। तो इसका जब डेरिवेटिव हम निकालें, वहां पे जीरो था इसीलिए हम इसको जीरो डाल दिए, राइट। ओके सर, तो इसको ठीक है डेरिवेटिव सर, करेंगे। तो समझ गया। अभी क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू 1 आ गया। नाउ यू हैव टू फाउंड द थ्री इक्वेशंस, the three equations naming as A2 plus B2, A2 plus B2 plus C2, and that is equal to 2. That is first equation. 4A2 plus 2B2 plus C2, that is equal to 33. Next equation, 2A2 plus B2, that is equal to 1. ये थ्री इक्वेशन को हम चूज करें, अभी कंसिडर कर लिए। अभी ये थ्री इक्वेशन लेकर हमको सॉल्यूशन करना है। तो सी, ये इक्वेशन फिक्स रखेंगे, इस इक्वेशन में C2 को माइनस कर देंगे। तो थोड़ा ऊपर दीजिए तो सर, ये 2A2 प्लस B2 1 कैसे हुआ? ये A1 0 था, यस सर, B1 1 था, 2 into 0 plus 1, B1 यहाँ Yes, पे sir. वैल्यू किए हैं। यस सर, यस सर। सर वो वाला जो सेकेंड लाइन वो आया कैसे? 2A2 प्लस B2। 2A2 plus B2 इसका डेरिवेटिव वैल्यू है। इस इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव कर दिए हैं तो 2A2 plus B2 आ जाएगा। 2A2 x1 plus B2, तो यस सर। अभी x1 का वैल्यू 1 जब डाल देते हैं तो इक्वेशन 2A2 plus B2 आ जाएगा। देन A1 एंड B1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन इक्वेशन 2A2 plus B2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। Then you see three equations we consider here. A2 plus B2 plus C2 is equal to 2, and 4A2 plus B2, 2B2 plus C2 is equal to 33, and 2A2 plus B2 is equal to 1. Clear? Now, yes sir, ये थ्री इक्वेशन मुझे सिंप्लीफाई करना होगा एंड द वैल्यू इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टू में देखो, ये जो इक्वेशन ये दोनों को हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम A2 एंड B2 का इक्वेशन में रहेगा। देखो, ये सपोज हम नेमिंग कर दे इक्वेशन I एंड दिस इज सेकेंड I। सेकेंड I माइनस I करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड I माइनस I कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 4A2 माइनस A2 कितना है, व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट, 4A2 माइनस A2 दैट इज 3A2 आ गया, एंड 2B2 माइनस B2 ओनली B2 आएगा, एंड दिस इज 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 31। क्लियर? दिस इज इक्वेशन 3 जस्ट हियर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज 2A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 1। अभी एक जो टू इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफिकेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज A2 ओनली दैट इज इक्वल टू 30। एवरीवन क्लियर? क्लियर है और डाउट है बोलो? तो इसको तो कैलकुलेटर सर में वैल्यू निकाल सकते हैं।
इसका नहीं ऐसे तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं डायरेक्ट ना? हाँ, डायरेक्टली यू कैन पुट कैलकुलेटर, दैट इज वेरी इजी फॉर यू। यू कैन डाल दीजिए एग्जैक्टली, और रिमेंड नहीं हुआ है, कैलकुलेटर है पास में, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, डाल दीजिए कैलकुलेटर में, देखो कितना आता है। सर 30 माइनस 59 और 31। ओके, तो हम a1 a2 हो गया, फिर वैल्यू b2 आ जाएगा, b2 का वैल्यू कितना आ गया ना, -59, एंड c2 का वैल्यू आ जाएगा 31, यही है तो। यस सर। ओके, तो वी कैन एवेलुएट द ऑल कांस्टेंट वैल्यू। और भी एक क्वाड्रेंट है जिसको हम नेमिंग करेंगे अभी, a3। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ये हो गया, तो थर्ड सिस्टम बिकम्स, हमारा थर्ड सिस्टम भी है, द थर्ड सिस्टम्स। थर्ड सिस्टम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे थर्ड सिस्टम में? थर्ड में जो इक्वेशन है उसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 4a3, जो इक्वेशन था थर्ड सिस्टम का, a3 x2 स्क्वायर प्लस b3 x2 प्लस c3, that is equal to f2, and derivative for 2a3 x2 plus b3 is equal to previous का डेरिवेटिव f2 का 2a2 x2 plus b2, and next equation last वाला a3 x3 square plus b3 x3 plus c3 is equal to f3. These are the last systems, and last system में हम देखेंगे, डाल दीजिए x2 वैल्यू, x3 वैल्यू, f2 वैल्यू, and this value you can substitute now. x2 value has given us, what is the x2 value? 2 है, तो 4a3 आएगा प्लस 2b3 आएगा प्लस c3 आएगा, which is equal to f2. What is the f2 value? That is 33. You substitute your 33. Again 2x2 value, x2 value is 2, so 2 into 2 4a3 plus b3, which is equal to, what is the a2 value, x2 value and b2 value? 4a3 plus b3 is equal to, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो ये ऑल वैल्यूज आर नॉन वैल्यू, a2 वैल्यू, x2 वैल्यू, b2 वैल्यू, ये नॉन वैल्यू है, उसको डाल दीजिए, देखो कितना आता है, 61 आएगा। लास्ट इक्वेशन में x3 वैल्यू है, x3 वैल्यू कितना है, 3 है, 27 a3, sorry 9 a3, this is 9 a3 plus नेक्स्ट वैल्यू कितना आएगा, 3b3 plus of c3, and that is equal to 44. अभी कैलकुलेटर
पुट इन दिस इक्वेशन, ये कैलकुलेटर में डाल दीजिए, तो मुझे बोलो कितना सॉल्यूशन आएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा? द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम, what is the solution of the system? X equal to 150. X is equal to A3 is equal to A3 वैल्यू आएगा, B3 आएगा, C3 आएगा। So A3 becomes 150 आया है मेरा, B3 minus 539 आ गया, C3 511। Yes, sir. ठीक है, तो ओके। So now therefore the quadratic splines corresponding the intervals, therefore quadratic splines corresponding interval के बीच में क्या आएगा हम देखिए। तो फर्स्ट आ जाएगा P1x, that is फर्स्ट इंटरवल। तो ऑल वैल्यूज हम फर्स्ट इंटरवल में जो डाल देते हैं, कितना आएगा फर्स्ट इंटरवल में 0 to 1 के बीच में जो वैल्यू हम कंसीडर किए थे, दिस इज A1 B1 C1 डाल देते हैं, तो कितना आएगा? A1 वैल्यू 0 था, B1x plus C1, B1x plus C1 कितना आएगा? B1 वैल्यू डाल देंगे 1, C1 मतलब x plus 1, that is lies on the interval 0 less than equal to x less than equal to 1. Again P2x सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है देखो, A2x square plus B2x plus C2, A2x square plus B2x plus C2। A2 का वैल्यू कितना है? A2 30 है, so 30x square प्लस B2x, B2 कितना है? -59, -59x प्लस C2, C2 कितना है? 31, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। सिमिलरली P3x डालेंगे, P3x वैल्यू आ जाएगा B3 150 x square। नेक्स्ट A3 B3 is -539 x plus C3 511। This is in the interval of 2 is less than equal to x is less than equal to 3. These are the three polynomials, quadratic splines in the polynomials of the problem. But our objective, an estimate क्या है? An estimate of this problem at 2.5. 2.5 so lies in the P3. So this is F3, means this is F3 2.5, that is equal to P3 2.5, that is equal to 150 into 2.5 cube minus 539 into 2.5 plus वो स्क्वायर है ना? स्क्वायर होगा सर वहाँ पे। oh sorry हाँ ये स्क्वायर हुआ, राइट, दिस इज स्क्वायर। This is a square. Then after simplification of this value, कितना मिलवा जाता है? 110
101. 101. So this one is the result of the given problem by quadratic equations. Quadratic cubic spline, quadratic spline interpolation formula, one example. If have you any doubt, then you can ask me now. सर इसका एक और एग्जांपल करा दीजिए तो पूरा क्लियर हो जाए। ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो गई है, ये प्रीवियस क्लास में थोड़ा बाकी था ना। ओके, तो अभी एक्चुअली नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन। तो ये तो एक्चुअली तुम्हारा खत्म हो गया, टाइम 1 मिनट है। So next class we will discuss this. Tomorrow I will take another class. Are you free tomorrow? Hello. सर ऑलरेडी स्ट्रील स्ट्रक्चर और एचओडी सर ले रहे हैं क्लास। Okay. The tomorrow is not okay. ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक्स्ट्रा क्लास को अभी कंसीडर करना पड़ेगा। एक्चुअली लैपटॉप मेरा खराब हो गया था।